Now I invite today's speaker, Dr. Gaurav Gupta, Gaurav Narain Gupta. Everybody knows him. He's a leading cardiologist of our city, Gorakhpur, and he's doing lots of work in his clinic and Savitri Hospital and everywhere where he goes. So now I invite Dr. Gaurav for his talk on approach to chest pain. Good morning, everybody. Thank you very much for inviting me to make this presentation. So today we'll be talking about approach to a patient with chest pain. Basically, I'll be talking about what are the various etiologies of chest pain, how we approach a patient with chest pain, and how we can focus on the life-threatening causes of chest pain so that we can triage them and send them to a proper center or for proper treatment as soon as possible. So basically, you have to understand the chronology. First, I will make you scared that if a chest pain patient comes, you have to treat it with utmost emergency. Then I will let you understand that there is no point in getting afraid, because if we get afraid, somebody might die. That somebody will be the patient, not us. And by the end of it, you will understand that it is as easy as a walk in the park. If we are very careful in our history taking, more than 50% of the times we will get our diagnosis by the history itself, and with a careful examination and some basic investigations just to confirm the diagnosis, we can easily manage each and every patient of chest pain or send him to a proper center if we find something dangerous. So this is the most common complaint in the emergency department, and 5 to 10% of all emergency department visits are patients of chest pain. There can be a wide range of etiologies depending on with all the organs and structures in the chest getting involved. It can be cardiac, it can be pulmonary, it can be gastrointestinal, it can be musculoskeletal, it can be neurological. So why do we want to distinguish the cause? Because that will let us target our treatment towards the patient. And how do we distinguish different causes of chest pain? I'll get to that. If you look at basic statistics, approximately 7 to 10 million annual visits in the United States are because of chest pain. And after diagnostic evaluation, only 15 to 25% of those patients have acute coronary syndrome. So only say 1 in 4 patients have acute coronary syndrome, which might require a specialist evaluation and probably urgent treatment. The rest can be managed at your own pace, at your own leisure in the OPD or maybe in a simple setup. What is important is that diagnosis of acute coronary syndrome is missed in approximately 2% to 5% patients depending on various data banks, which can lead to catastrophic consequences. So what lies in the chest? We have various organs like the skin, muscles, bones, joints, heart and vessels, lungs and airway, esophagus, and the nerves. So our chest pain can come from any of these particular organs. Our common causes of chest pain will be anxiety. Anxiety does produce chest pain for some people, especially young individuals. There are cardiac causes which can be myocardial ischemia, myocardial infarction, myocarditis, pericarditis. Even mitral valve prolapse does cause chest pain. Aortic dissection, aortic aneurysms can cause chest pain. Esophageal spasm, esophagitis, Mallory Weiss tear can cause chest pain. Bronchospasm, pulmonary embolism, pulmonary infarction, any respiratory tract infection or interstitial lung disease, tracheitis, pleuritis, pneumothorax, malignancies, all of these can cause chest pain. Musculoskeletal causes can be osteoarthritis, a rib fracture, intercostal muscle injury, costochondritis. Neurological causes may be prolapsed intervertebral disc, herpes zoster, and thoracic outlet syndrome. So basically, if I have a patient of chest pain, it could be because of any of these particular causes. So again, this is a repeat: myocardial infarction, pericarditis, myocarditis. Aortic stenosis also causes chest pain.
Asthma, COPD, because of the constant breathing effort and cough, they can have atypical chest pain. A perforated ulcer can also present as chest pain. Even pancreatitis, cholecystitis, which I have missed over here, pancreatitis, cholecystitis, liver abscess, these can also mimic chest pain. So what are the causes of chest pain that can cause mortality? This is important because we want to rule in or rule out these first. If we have a potential case that can cause mortality or significant morbidity, we want to treat him on an urgent basis or send him to a particular center where he can be managed appropriately on an urgent basis. So these are the common causes that might cause mortality: acute coronary syndromes, pulmonary embolism, aortic dissection, esophageal rupture, pneumothorax, pneumonia, pulmonary hypertension, myocarditis, cardiac tamponade. So we have to rule in or rule out these by a quick history evaluation, a quick clinical examination and some basic investigations to find out whether our patient is in any of these fitting into any of these criteria. If yes, then he has to be managed on an urgent basis or sent somewhere where he can be managed. Otherwise, we can do it at our own normal pace. What are the common benign causes of chest pain? Musculoskeletal, esophagitis, any bronchitis which can be secondary to cough, even in COPD, non-specific chest pain. The most common benign cause is when we tell the patient we are not sure, we don't know what is the cause of chest pain, but it is not going to hurt you. Now, this is something that we might know most of the times, that we are not sure on a cursory history evaluation, diagnostic evaluation, but when we tell this to the patient, that is the point when the patient starts panicking that the doctor doesn't know what he is treating, then how will he cure me? If we look at epidemiology of chest pain in primary care and emergency department settings, these are US data. 36% of patients do have in the primary care in United States of musculoskeletal causes. Serious cardiovascular disease are around 16% and non-specific chest pain is around 16%. While taking history, we should always ask the patient to point to the pain because that is a very significant pointer towards the etiology of the pain. So how do we differentiate typical versus atypical? Typical chest pain is something that we call as if it is from a cardiac origin. If the patient has typical or someone has labeled it as typical, in all probability it is a cardiac origin, or whoever has labeled it considers it as a cardiac origin, which means it has to be treated on an urgent basis. Atypical means it appears to be a non-cardiac chest pain and in all probability not very significant or not very serious. So typical chest pain is characterized as discomfort, pressure rather than pain. The time duration is usually a longer, more than a few seconds to minutes. It is usually provoked by activity and exercise, although it can still occur at rest. Usually it radiates to the arms, to the jaw, specifically the left arm, but it can radiate to the right arm also. Does not change with respiration position. So if I ask the patient to take a deep breath or go to the left lateral or right lateral position and the chest pain is changing in intensity or character, unlikely to be a cardiac chest pain. Usually cardiac chest pain is associated with sweating, nausea, maybe vomiting, and it is usually relieved with rest and nitroglycerin in a sublingual form. Atypical pain is pain that can be localized with one finger. So if my patient is pointing his pain like this, in all likelihood it is not a cardiac pain. Now if he comes like this, which is a classical textbook description, then it is in all likelihood to be a cardiac origin. If it is a constant pain which is lasting for days or weeks, unlikely to be cardiac. Cardiac pain does not last like this. Or if it is an acute esophagitis or pneumothorax or pulmonary embolism, it is not going to last for so long in a hemodynamically stable state where the patient is walking to us. Any fleeting pain which lasts for a few seconds is unlikely to be cardiac pain. Many times patients come for a few seconds they feel some severe pain and then it disappears and it is recurrent and coming back. It is unlikely to be of cardiac origin, and any pain that is reproduced by movement, deep inspiration, any palpation is unlikely to be cardiac in origin.
Again, your ischemic cardiac pain is central and diffuse. Non-cardiac pain is peripheral or localized. Cardiac chest pain can radiate to the jaw, neck, shoulder, occasionally to the interscapular region, sometimes to the epigastrium also, to the tips of the fingers. It has been noted to radiate to the tip of the tongue also. Usually non-cardiac chest pain does not radiate or is radiating to some other site. This is tight, squeezing, choking kind of chest pain. Non-cardiac pain is sharp, stabbing, catching in character. Ischemic chest pain is precipitated by exertion or emotion. Non-cardiac chest pain can be spontaneous, is usually not related to exertion, can be provoked by posture, respiration or palpation. Ischemic chest pain, cardiac pain is usually relieved with rest or sublingual nitrates. Although sublingual nitrate might also relieve the patient if the patient has esophageal spasm. Non-cardiac chest pain is not relieved by rest and it has low or no response to nitrates. Ischemic cardiac pain is usually associated with breathlessness, sweating, nausea, maybe vomiting, maybe transient loss of consciousness. Non-cardiac chest pain is not usually associated with these particular factors. Again, likelihood for MI based on chest pain history, if it is radiating to the right arm or shoulder, radiating to both arms or shoulder, exertional radiation to left arm associated with sweating, nausea, vomiting. If the patient has previous history of angina or MI and he is saying that it is worse or similar to that, or it is described as pressure, it is more likely to have be a cardiac origin pain. If the patient has pleuritic pain which changes with position or respiration, positional change of pain, sharp stabbing character, reproducible with palpation, if there is an inframammary location, non-exertional, unlikely to be cardiac chest pain. So the patient with acute coronary syndrome usually describes as heavy chest pressure or squeezing, a burning feeling with or without difficulty in breathing. The pain often radiates to the left shoulder, neck or arm, although may radiate to the right arm also. Typically builds in intensity over a period of a few minutes, stays like that, and if not treated, the intensity might start reducing over a few minutes of time and then recur. Pain usually begins with exercise or psychological stress but might occur at rest also. Any atypical description reduces the likelihood that my patient has cardiac chest pain, and we know that ACS does occur in patients with atypical symptoms, especially women, elderly individuals and diabetic individuals. So if you have a diabetic individual, even atypical chest pain becomes important because they will not have the classical presentation. They might have, but most of the times they do not have classical descriptions of chest pain, radiations and symptoms. Sometimes they might not even have chest pain at all. So a diabetic, an elderly individual and especially elderly women, atypical presentation of chest pain should also be given due respect and evaluated accordingly. So American College of Cardiology also gives a particular list of descriptions that are characteristic of unlikely to be due to myocardial ischemia: pleuritic pain, sole location of discomfort in the abdomen, localized by the tip of a finger, especially over the left ventricular apex. If somebody is pointing with a finger over the left ventricular apex, unlikely to be cardiac origin. Reproduced with movement or palpation, constant pain persisting for many hours or days, very brief episodes of pain lasting a few seconds or less, and pain that radiates into the lower extremities also, unlikely to be cardiac in origin. So what are the key components of the history of presenting illness in the chest pain patient, and what can we get out of this particular patient in a few minutes? Location, central, left or right. What are the associated symptoms, whether the patient has shortness of breath, sweating or nausea, whether the patient has gradual or sudden onset of chest pain, are there any provoking or relieving factors for the patient, whether it is visceral or somatic, whether it is where it is radiating to, and if we can ask the patient to point out the severity on a scale of 1 to 10, say 1 being minimal pain and 10 being maximum pain. It can be a random scale also, and based on that he or she can tell us
how he feels. What are the key parts of the rest of the history? We want to know the past medical history, whether the patient has anything in the past which can suggest that the patient is can be having acute coronary syndrome. So if the patient is already a known cardiac patient, gives us some pointer towards that direction. If the patient is a diabetic, then we have to be slightly more cautious. If the patient is on any cardiac medications for any reason, if the patient has any allergies, that is part of any case. What is the social history, whether the patient, what addictions does he have, and what is the family history, any family history of sudden cardiac death, any family history of early myocardial infarction or deep venous thrombosis or pulmonary embolism, and if anybody in the family, brother, siblings or parents did have any coronary artery disease, at what particular age did they have their first manifestation. Key parts of the physical examination to be done in a couple of minutes. What is the general appearance of the patient? Is the patient very sick or is the patient looking comfortable? If the patient is comfortable and likely to be of serious magnitude of cardiac origin, what are the vitals of this patient? What are the heart sounds? What are the respiratory system findings? Is there any elevation of the jugular venous pressure? Is the abdomen distended? Any lower limb edema or calf tenderness which might point towards deep venous thrombosis. So our initial goal in the emergency department or soon as the patient presents to us is to identify life-threatening conditions like myocardial infarction, pulmonary embolism, aortic dissection, and once we do this, ABCs remain first: airway, breathing, circulation, which has to be we should be sure that ABC are fine, and if we want to secure any of these, to start doing that. So what to do in the first 60 seconds, how does the patient look? This is when your patient presents as an acute emergency. What are the patient's vital signs? What is his history? What is the past? And over the next few minutes, what you are going to do is to determine how this patient is going to have the outcome of this particular patient is going to be. If it's a simple problem, then it doesn't matter at all, even if we miss something in the initial diagnosis. But if it is a potentially life-threatening condition, then the faster we move and the more accurately we move, it is going to be better for the patient. So what are the bedside tests you are going to do, and what are the cheap medications that you want to do? So after the history and physical examination, first thing that has to be done is an electrocardiogram. Two reasons. One is to rule in a cardiac issue, although a normal ECG does not rule out a cardiac problem, but it certainly rules out that the patient is not having ST elevation MI at least. And even if the patient has non-specific changes, then we can help narrow down our differential diagnosis. Also, it gives reassurance to the patient that an electrocardiogram has been done and either it is normal or not showing non-specific changes. A portable chest X-ray or a proper chest X-ray, whatever is available. What are the cheap and important medications you should consider? If we are suspecting a clinical diagnosis of acute coronary syndrome, loading of antiplatelet should be given immediately. If we are considering a patient of STEMI, non-STEMI, unstable angina, then it should be dual antiplatelet actually, aspirin with clopidogrel or aspirin with ticagrelor, based on whatever is available. And a sublingual nitrate. Sublingual nitrate is going to help in relieving the pain for the patient, number one, and in re-emphasizing our diagnosis. Now once this has been done, we can go for a more detailed history, a more targeted physical examination, go for more investigations as and when required. We can go biochemistry of the patient, we can go for a troponin, we can get an echocardiogram done, whatever is available, and then decide how to go about it. The goal is to categorize the patient now, whether the patient has a musculoskeletal wall abnormality causing the chest pain, whether it is a respiratory origin or it is a cardiac origin. So this is how your your chest pain pans out to be. Either it is cardiac or non-cardiac. So cardiac, it can be ischemic or non-ischemic. Ischemic is usually unstable angina, chronic stable angina or myocardial infarction. Non-ischemic will be either pericarditis, myocarditis, maybe from the great vessels also, aortic stenosis also.
Non-cardiac can be gastrointestinal, gastroesophageal reflux, spasm, mallory tear, peptic ulcer disease. Non-gastric gastroesophageal can be aortic dissection. This should not be here actually. Pulmonary embolism, pneumonia, pneumothorax, any musculoskeletal cause. Thank you. Ma'am. Suppose patient is having, she is old, he or she is having diabetes, he or she has cardiac surgery past. How frequently should they get investigated? Because for them it is a phobia that any pain is a chest pain. Ma'am, routine evaluation depending on comorbidities has to be defined. If the patient has already undergone cardiac surgery and is a diabetic, then every 3 to 6 months routine evaluation is recommended if the patient is stable. What are the routine things that have to be evaluated? Ma'am, on periodic Like visits. angiography or what? Ma'am, angiography is to be done only when indicated. If the patient has any new symptoms, Chronic chest pain. ma'am, if the patient has chronic chest pain, which it means that the patient has chronic stable angina. Now, if the patient has already undergone angioplasty or coronary artery bypass grafting surgery and the chest pain or the angina remains at a particular at the same level, we call it chronic stable angina or chronic cardiac syndrome. Now, this particular individual does not require an angiography unless and until some new symptom develops. Either the patient has to go some non-cardiac surgery, then we might require an angiography to determine what is the perioperative risk of any particular problem, or if there is a sudden increase in the chest pain, intensity or duration or frequency of chest pain, or there is increasing breathlessness or increasing fatigue for some reason, then this particular patient might require an angiography. Before that, the patient will require routine an electrocardiogram, an echocardiogram. If the patient can undergo a treadmill test, then a treadmill test. If not a treadmill test, then a dobutamine stress echocardiogram. Then a dobutamine stress echocardiogram. Depends on the clinical scenario of the patient. If the patient is stable, the chest pain remains of the same. ECG and echocardiogram, annual echocardiogram, nothing else, ma'am. And blood test, routine blood test. Blood test. Routine blood test. Routine. Ma'am, once a year you have to do all the routine blood tests at least once a year. Or CRP and all those things. Not exactly CRP. You can go for HSCRP, ma'am, but it is not going to change anything. That high sensitivity CRP, C-reactive protein test is for primary prevention point of view. For second, this is a secondary and tertiary prevention. So there is no role of HSCRP over here. And more so, your patient is a diabetic, HSCRP and CRP most of the times will be on a slightly higher level. So your routine evaluation annual would be routine biochemistry, complete blood count, KFT, LFT, HbA1c, sugar levels, thyroid status, electrolytes, ECG. What about the elderly women who have not gone any bypass? Ma'am, again, after a particular age, and that age is very arbitrary. Some call it 40, some call it 50, some call it 60. Then there is that whether targeted or not. A routine electrocardiogram, a routine echocardiogram, and a treadmill test, at least a baseline treadmill test should be done, so that treadmill test, so provided the patient can walk on the treadmill, so that we have a baseline cardiac status, and we want a fasting lipid profile and routine biochemistry, so that if any treatment has to be started, we can start it, and if not starting, we know what is, say if I have done some tests on 13th of July and 3 months later the patient has some problem, so we can compare with the baseline ki what was there on 13th July and what is there now. Many time what happens ki patient atypical chest pain के साथ आता है 3 days 4 days लेकिन जब हम ECG करते हैं तो उसमें 3 वर्जन आता है V1 to V4 तक या 3 तक, तो what should we interpret for that 3 वर्जन? सर अगेन आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस, आप चेस्ट पेन लेके आया है, क्लिनिकली आपको पता है कि कार्डियक लग रहा है या नहीं लग रहा है, देन आपने ECG करा लिया,
ECG में टी वेव इन्वर्जन है V1 to V4 या V1 to V6। अगर यंग फीमेल है या मे बी ए फीमेल मिडिल एजेड फीमेल, यू कैन से कि शायद जुवेनाइल पैटर्न होगा जो परसिस्ट कर रहा है। बट अगर कोई भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर एन इकोकार्डियोग्राम एंड अ ट्रोपोनिन टेस्ट। 3-4 दिन में अगर है, अगर ट्रोपोनिन नेगेटिव हो जाता है तो यू कैन बी श्योर दैट इट इज़ नॉट अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मे और मे नॉट बी ओल्डर कार्डियक प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एंड इकोकार्डियोग्राम से आपको पता चल जाता है कि कोई रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मैलिटी है कि नहीं है। अगर रीजनल वॉल मोशन अबनॉर्मैलिटी नहीं है तो यू कैन इग्नोर इट। मोस्ट प्रॉब्ली टी वेव इन्वर्जन नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कई बार ट्रांजिएंटली भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इट डजंट यूजुअली होल्ड अनलेस एंड अनटिल क्यू वेव भी है। सर आप जानते हैं क्यू वेव भी आ रहा है या कुछ और भी चेंजेस हैं उसमें। चेस्ट में आपने एक पॉइंट दिया था, चेंज इन निपल रिंग, वो क्या होता है? सर वो एक्चुअली वो जहाँ से मैंने स्लाइड पिकअप किया था उसमें क्या था कि वो एक केस डिस्कस हुआ था जिसमें किसी पेशेंट को रिसेंटली निपल रिंग्स लगे थे। जैसे ईयर रिंग्स होते हैं वैसे कुछ लोग निपल रिंग्स लगाते हैं, ये वेस्ट में होता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी सूचर भी हम लेते हैं, अगर कोई कार्डियक स्ट्रक्चर मसल का अगर डीप सूचर हो गया है या नर्व्स का उसमें आ गया तो एक नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन परसिस्ट करता रहता है। तो वो एक एग्जाम्पल था कि जब हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, अगर हम उसका शर्ट नहीं खोल के देखेंगे, अगर हम उसको प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं देंगे तो वी कैन मिस समथिंग दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। उस पॉइंट ऑफ व्यू से था सर। ये रिकमेंडेशन है कि कई बार ये उसमें यहाँ पे भी कई बार बताया गया और उसमें भी आता है सोशल मीडिया पे भी कुछ एक इमरजेंसी पैक अपने पास रखने को कहा जाता है टैबलेट्स का, जिसको कि ऐसी इमरजेंसी को जैसे मान लीजिए रात को या कभी कुछ होता है तो हम तुरंत OPD में जाके डायग्नोसिस नहीं करवा पाते हैं या उसमें टाइम कर देता है। तो क्या कुछ इमरजेंसी मेडिसिन का कुछ ऐसा है कि उसको हम अपने पास रखें जिसको हम दे सकें? सर जो इमरजेंसी मेडिसिन वाला जो पैक की आप बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली 4 टैबलेट्स या 5 टैबलेट्स होते हैं। 300 मिलीग्राम्स ऑफ एस्पिरिन, जो लोडिंग डोज है एस्पिरिन का 300 मिलीग्राम्स। 300 मिलीग्राम का टैबलेट हम लोग के यहाँ नहीं आता है, हम लोग के यहाँ 325 का आता है, 150 का आता है, 75 का आता है। तो या तो 75 के 2 या 75 के 4, 150 के 2 या 325 का 1। क्लोपिडोग्रेल के 4 टैबलेट, 75 के 4 या 150 के 2 या 300 का 1। अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम या रोजवास्टैटिन 40 मिलीग्राम, ये इमीडिएटली लेने के लिए है। एक सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट देना है पेशेंट को और एक पैंट्रोबिजोल या राबिविजोल, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की अगर कोई गैस्ट्रिक कंपोनेंट है या एस्पिरिन की वजह से अगर गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा तो उसको कवर कर देगा। सर यहाँ एक्चुअली में ये बहुत हाईली रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो बहुत हाईली रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग हुआ इसके बाद तो फिर वो ब्लीडिंग कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, पेशेंट को मैलोरी वेस्ट टेयर है या ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, कोई मैलिग्नेंसी है तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो रखते हैं बहुत सारे लोग जब टूर पे जाते हैं, जैसे अगर एल्डरली इंडिविजुअल्स का टूर कहीं बाहर जा रहा है तो ऐसे कुछ पैक्स रखते हैं कि अगर कुछ होगा तो तुरंत दे देंगे। बहुत क्लियर कट रिकमेंडेशन कहीं भी नहीं है कि ऐसा घर पे या पास में रखना चाहिए एंड अगर ऐसा कुछ होता है तुरंत ले लें। बहुत सारे पेशेंट्स भी OPD में आते हैं, मैंने देखा, वो कहते हैं चेस्ट पेन हुआ, हमने एक एस्पिरिन ले लिया, उसके बाद हमने कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर 1 महीने बाद हुआ, फिर एक एस्पिरिन ले लिया, एस्पिरिन से पेन रिलीफ हो जाता है। सर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है एस्पिरिन से रिलीफ होने का। 75 मिलीग्राम का एक टैबलेट का पेन इफेक्ट भी नहीं आएगा, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज एनी पेन रिलीफ। बस उनके दिमाग में बैठा हुआ हमें कुछ हुआ, हमने टैबलेट लिया और हो गया, मतलब कुछ होता नहीं है उससे। तो अगेन वो गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। सर सॉर्बिट्रेट में एक्चुअली जो सबलिंगुअल नाइट्रेट है या सॉर्बिट्रेट है, ट्रेड नेम है एक्चुअली आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, 5 और 10 मिलीग्राम का टैबलेट आता है। इसको आप जब सबलिंगुअली लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली आता है और इमीडिएटली ख़त्म भी हो जाता है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। नाइट्रेट थोड़ा सा हाइपोटेंशन करता है, पर चूँकि उसका इफ़ेक्ट इतना शॉर्ट लिव्ड है, अगर करेगा भी तो इमीडिएटली उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा।
एंड अगर ईसोफेजियल स्पाज्म है तब भी वहाँ उसका इफेक्ट थोड़ा सा आता है, तो थोड़ा सा ईसोफेजियल स्पाज्म को रिलीव कर देता है। तो सबलिंगुअल नाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का जो टैबलेट होता है वो दिन लेने में कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट पेरिफेरी में क्या होता है, जब पेशेंट्स यूजुअली निकलते हैं चेस्ट पेन लेके, केमिस्ट के पास पहुंचते हैं या जनरल प्रैक्टिशनर के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले वो एक सॉर्बिटेड टैबलेट दे देते हैं, ये खा लो और उसके बाद जहां तुमको जाना जाओ, तो उससे पहुंच जाओगे। एंड बाय द टाइम वो आते हैं वो कहते हैं भी वो लिया, उससे रिलीफ हुआ, अब उससे रिलीफ हुआ, किसी और से रिलीफ हुआ, वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। सर ईसोफेजियल स्पाज्म तो उसको रेप्लिकेट करेंगे तभी हो पाएगा। अगर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है तो आई एम नॉट वेरी श्योर, कुछ टेस्ट करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, रेप्लिकेट करते हैं कि ईसोफेजियल स्पाज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2-3 पेशेंट्स मैंने देखे हुए हैं जिसमें टिपिकल चेस्ट पेन होता है पेशेंट को, ब्राडिकार्डिया होता है चेस्ट पेन के दौरान, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है एंड उसको नाइट्रेट दिया या हमने आईवी फोर्टविन दिया या मॉर्फिन डेरिवेटिव कोई सा भी दिया एंड उसको थोड़ा रिलीव हो जाता है एंड अल्टीमेटली सारा कार्डियक रूल इन करने के बाद पता चलता है कि लोअर ईसोफेगस में कोई ग्रोथ था या कुछ और था। अब उसकी वजह से स्पाज्म हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, एंड ब्राडिकार्डिया का उससे क्या रिलेशन था पता नहीं। बट यूजुअली चेस्ट पेन के साथ अगर ट्रांजिएंटली ब्राडिकार्डिया हो रहा है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लोअर ईसोफेजियल इटियोलॉजी की तरफ जाता है। सर नाइट्रेट्स और सिल्डेनाफिल कभी साथ में नहीं चलते। अगर पेशेंट नाइट्रेट पे है तो वो सिल्डेनाफिल नहीं ले सकता है। अगर नाइट्रेट पे, अगर उसको सिल्डेनाफिल लेना है तो उसको लास्ट डोज ऑफ नाइट्रेट स्किप करना पड़ेगा। Can you think what is the accuracy of CT angio to avoid the angiography? Yes. सर ये हमारा और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का झगड़ा रहता है। ये ट्रोपोनिन आई का कुछ ये राइजिंग टाइटर का भी कुछ होता है क्या? यस सर। सर एक्चुअली सर मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर सबके सवाल का जवाब। ट्रोपोनिन का रूल ये रहता है कि पेशेंट जैसे ही प्रेजेंट करता है, चाहे 10 मिनट का पेन हो, चाहे 2 घंटे का पेन हो, 2 दिन का पेन हो, हमें इनिशियल ट्रोपोनिन करना है। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हम हर 6 घंटे पे ट्रोपोनिन रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा डायग्नोसिस या तो कंफर्म नहीं हो जाता या ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस नहीं मिल जाता। हम करते इसलिए नहीं क्योंकि कॉस्टली होता है, किट से भी करेंगे तब भी 600-700 रुपये का पड़ेगा, अगर क्वान्टिटेटिव कर रहे हैं तो 1000 से 2000 रुपये के रेंज में जाता है। अब ट्रोपोनिन कितना बढ़ा हुआ है वो प्रोग्नोसिस के साथ उसका कोरिलेशन है। अगर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो अच्छा प्रोग्नोसिस है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा खराब प्रोग्नोसिस है। राइजिंग टाइटर एंड रिड्यूसिंग टाइटर हमारा ये डिसाइड करता है कि पेशेंट किस अभी डेंजर जोन में है अगर राइजिंग टाइटर है, अगर रिड्यूसिंग टाइटर है तो डेंजर उसका ख़त्म हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरवेंशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो थोड़ा सा टाइटर का हमेशा रहता है। आपका सवाल सर एक्चुअली में क्या होता है कि सीटी एंजियोग्राफी अगर नॉर्मल आ गया, एब्सोल्युटली नॉर्मल, तब तो एंड ऑफ द स्टोरी है। मतलब सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, कोई और रीज़न है का उसका। अगर उसमें माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ भी आ जाता है तो इट हैज़ टू बी कोरिलेटेड विद द गोल्ड स्टैंडर्ड विच इज़ द कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो हम लोग करते हैं। तो कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ सीटी एंजियोग्राफी माइट बी द फर्स्ट चॉइस। तब होता है जैसे बिजी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ उनके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही सीटी एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि पेशेंट कार्डियक ओरिजिन का हो सकता है एंड दे आर नॉट श्योर बेस्ड ऑन ईसीजी एंड ट्रोपोनिन, वो सीटी के लिए भेज देते हैं जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड पल्मोनरी एंजियोग्राफी दोनों एक साथ हो जाती है, जिससे ये 2 चीज़ें रूल आउट हो गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी नहीं है और कार्डियक सिग्निफिकेंट कार्डियक प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरा है कि अगर पेशेंट यंग इंडिविजुअल है जिसमें हमारा लाइक्लीहुड ऑफ सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कम है, यंग फीमेल है, यंग मेल है या अराउंड 30 to 40 है, हमें लगता है कि चांसेस कम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, लेकिन वी वांट टू रूल इन और रूल आउट। एट दैट पॉइंट इट माइट बी ए गुड ऑप्शन कि हम सीटी एंजियोग्राफी करके देख लें, क्योंकि डाई वैसे तो लोग कहते हैं कि सीटी एंजियो में डाई कम है एंड कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में ज़्यादा है। अगर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी एक ही एक्सेस से हो गया, अगर सिर्फ रेडियल से ही हो गया और फीमोरल नहीं करना पड़ा, तो वो डाई का लगभग सेम है। एंड
अगर वहाँ एंजियोग्राफी नॉर्मल हो गया तो हम रूल आउट कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर एज बढ़ती है वैसे ही कैल्सिफिकेशन बढ़ता जाता है, तो सीटी कैल्शियम स्कोर भी उसी लिए लिया जाता है। 50-60 के बाद अगर कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है तो ये अक्सर होता है कि सीटी एंजियोग्राफी में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा डिजीज़ आएगा बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन एंड माइट, और जब हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करेंगे तो ल्यूमिनल स्टेनोसिस उतना नहीं होगा क्योंकि कैल्सिफिकेशन सिर्फ वेसल वॉल में ही है, ल्यूमेन में नहीं है। तो वहाँ पर इट बिकम्स डबल एक्सपोजर कि पहले सीटी एंजियो भी किया और उसके बाद ये भी किया। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में खासकर अगर हमें कंफर्म्ड है कि पेशेंट हैज़ अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, आइदर नॉन एस टी एलिवेशन एमआई या एस टी एलिवेशन एमआई, वहाँ पे सीटी एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता भी चल जाता है हम कुछ करने नहीं वाले हैं। तो वी वांट टू डू अ कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कि हमें पता चल जाए एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ क्या है एंड अगर कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि इंटरवेंशन का प्लानिंग हमेशा कन्वेंशनल एंजियोग्राफी पे ही होगा, सीटी एंजियोग्राफी पे नहीं होगा। एंड प्री ऑप होता है बहुत सारे नॉन कार्डियक सर्जरीज, नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वाल्व रिप्लेसमेंट है या क्या कहते हैं पीडियाट्रिक इंटरवेंशंस वाले होते हैं, उसमें एक सीटी एंजियोग्राफी किया जाता है कोरोनरी ब्लड सप्लाई को कोरिलेट करने के लिए, ताकि हम उसी हिसाब से सर्जरी प्लान कर सकें। सर ऑल ड्रग्स आर लाइफ लॉन्ग। DAPT आपका पोस्ट अक्यूट क्लोपिडोग्राल सर वही जो अक्यूट अगर PCI हुआ है या नॉन या कंजर्वेटिवली मैनेज्ड अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तो ड्यूअल एंटीप्लेटलेट 1 ईयर के लिए है, उसके बाद सिंगल एंटीप्लेटलेट हो जाएगा अगर रेजिडुअल डिजीज़ कम है। कार्डियक बाईपास सर्जरी के बाद डिपेंडिंग ऑन सर्जन टू सर्जन इट इज़ ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन सिंगल एंटीप्लेटलेट थेरेपी लाइफ लॉन्ग होगा। फॉर सम it is single antiplatelet therapy from the beginning, lifelong. Statin will always be there, it will not go. We can reduce the dose, but we will never stop statin because हम यहाँ पे सिर्फ LDL को या lipid profile को target नहीं कर रहे, there are many other factors which are there. तो statin we can go to a bare minimum dose, but we cannot stop it altogether. Similarly, diltiazem है या beta blocker है, अगर उसका एक पर्टिकुलर इंडिकेशन होगा, इफ़ द पेशेंट हैज़ vasospastic angina then the patient has to be on diltiazem or verapamil. If the patient has a heart rate which is above 70, we want at least less than 70 heart rate, irrespective of blood pressure control. So that patient has to be on a beta blocker or has to be on a calcium channel blocker, verapamil or diltiazem, whatever. And nitrates, nicorandil, ranolazine, trimetazidine, ये सब डिपेंड करता है ऑन सिम्टम्स। Sir, diltiazem will be preferred only if the patient has vasospastic or Prinzmetal's angina. Prinzmetal's angina में patient has typical chest pain and during chest pain he or she has ECG changes but angiography shows mild disease which is not very significant. Otherwise beta blocker is the first choice always. If beta blocker is contraindicated or not tolerated, only then we can go for diltiazem or verapamil. Again, heart rate above 70 is not acceptable for any cardiac patient. It should be less than 70. Ma'am, diltiazem only if the patient is not tolerating beta blockers. Yes, ma'am. Gaurav, would you like to give any message to the senior citizens? I mean, the many people morning they walk in the university, so they do the brisk walking 2 kilometers, 3 kilometers. Like Dr. J.P. Jaiswal sir, Dr. Umesh Chandra, so many people. So don't you, what is your suggestion? It is one sort of a treadmill exam. I mean, it's a, So precisely, it is a. We don't have any problem on doing the brisk walking 2 kilometers, 3 kilometers. We are doing, in the morning. 5 kilometers. 5 kilometers. So what is? Sir, actually, there is something that is known as the poor man's treadmill test. Yes. Yeah, the non setup treadmill test जिसमें you are walking or running and if you reach your target heart rate and you do not have any symptoms or any untoward symptoms
then you can assume that you do not have any significant coronary artery disease problem. Target heart rate कैसे decide करते हैं? Treadmill वाला formula है 220 minus age. 20 minus. So if somebody is 60 years, then your target heart rate is around 160, 220 minus age. If we are achieving 85% of that without any symptoms, then you can safely assume that you are fit. हो सकता है coronary artery disease हो, लेकिन there are natural bypass, natural collaterals have opened up, everything is fine. So एक बेसिक सिंपल सा है, इट इज़ नॉट वैलिडेटेड बट इट इज़ अज्यूम्ड कि अगर आप 4 से 5 किलोमीटर चल रहे हैं, जो कि रिकमेंडेशन भी है. व्हाट्सएप में देखते हैं कि सडनली दे आपको मैम अक्यूट थ्रोम्बस फॉर्मेशन कभी भी हो सकता है, एंड अक्यूट थ्रोम्बस फॉर्मेशन कभी भी हो सकता है एब्सोल्युटली नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज में. सिमिलरली अक्यूट एरिथमिया, कोई भी अक्यूट एरिथमिया कभी भी हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अभी लास्ट ईयर पुरु राजकुमार सन इन कर्नाटका, ही डाइड, ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम द जिम, ही वाज कंप्लेनिंग ऑफ सम प्रॉब्लम्स, he went to his cardiologist and then he went and then he collapsed, and he was apparently very fit and was undergoing regular health checkups. एक वो सिद्धार्थ शुक्ला टीवी एक्टर था जो बॉडी बिल्डर भी है, एंड मैम ये देयर आर टू थिंग्स. वन इज़ कि सेम जो एथेरोस्क्लेरोसिस का जो फिनोमेनन है, जो पैथोफिजियोलॉजी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आर्टरीज़ में वो नैरोइंग कराता है, स्टेनोसिस कराता है, ऑक्लूजन कराता है. पेरिफेरल आर्टरीज़ में भी वही कराता है, बट अब्डोमिनल आयोटा में वो वाइडनिंग कराता है, एन्यूरिज्म कराता है. सेम पैथोफिजियोलॉजी अलग जगह पे अलग प्रॉब्लम्स क्यों कर रहे हैं, नोबडी इज़ वेरी श्योर टिल डेट. दूसरा, ये क्यों हो रहा है यंग लोगों में ज़्यादा, एंड सिर्फ थ्रोम्बस फॉर्मेशन ही क्यों हो रहा है? मोस्ट पीपल और अथॉरिटीज़ ब्लेम इट ऑन लाइफस्टाइल, जो हमारा आज का करंट लाइफस्टाइल है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं इन एग्रीकल्चर, इंसेक्टिसाइड्स एंड जो भी फर्टिलाइजर्स, उसकी वजह से. बट अगेन दीज आर नॉट प्रूव्ड थियोरीज, एवरीबडी हैज़ देयर ओन थियोरीज, बट नथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, हार्ट रेट उसमें इसको करता है या के बाद कितने तक हम उसको सेफ मान के चले कि हमको उसके ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम करते हैं या सर एक्चुअली फिजियोलॉजिकल हार्ट रेट जिसको हम साइनस टाकीकार्डिया बोलते हैं, 220 माइनस एज, ये गैनोंग में कहीं लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर लाइन में 220 माइनस एज. सो इफ़ से somebody 60 years, तो उसका सेफ लिमिट इज़ 160, 165 तक जा रहा है तो ठीक है, शुड नॉट ट्राई टू गो अबव दैट. एंड जो सिम्टम्स वाला पार्ट है, अगर 85% ऑफ दैट टच कर रहे हैं ट्रेडमिल पे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा करने के दौरान भी और बंद करने के बाद भी, तो वन कैन सेफली एज्यूम कि प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत कम है. मैंने देखा गया है कि जैसे जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, उनका हार्ट रेट कुछ दौड़ते तब भी ऊपर नहीं जाता. सर वो एथलेटिक जो रेगुलर वॉकर है, डेली वॉक कर रहे हैं, उनका हार्ट रेट ऊपर नहीं जाता उतना, जितना आप सोच रहे हैं कि वो अचीव करेंगे. तो क्या उनको माना जाए कि नहीं, उनको उतना पहुंचाना ही है? नहीं सर, एथलेटिक जो आप कह रहे हो एथलेटिक हार्ट रेट, एथलेटिक हार्ट होता है वो, उसमें क्या होता है जब हम कंडीशनिंग इतना ज़्यादा कर देते हैं, चाहे वो फिज़िकल कंडीशनिंग हो या फिर वो योगा से भी बहुत सारे लोग करते हैं, जिसमें वो अपना हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ा कम कर लेते हैं, 50 पे भी कंफर्टेबल रहते हैं, कई एथलीट्स का 40 के आसपास भी रहता है, क्योंकि कंडीशनिंग हो जाती है बॉडी की. उसमें वो हार्ट रेट बढ़ेगा ही नहीं. उसमें क्या होता है कि ये वैसे ही है जैसे अगर हम ट्रेडमिल कर रहे हैं, हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ट्रेडमिल हो गया, हम टर्मिनेट करना है, कि मतलब वी हैव सीन वट एवर वी वांटेड टू सी. हार्ट रेट पे होता है, टारगेट हार्ट रेट उसने अचीव कर लिया है, उस पर वो कंफर्टेबल है, वी टर्मिनेट द टेस्ट. अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स पे है और हमने ट्रेडमिल से पहले बंद नहीं किया, पहले हमेशा बंद कर दिया जाता था 2-3 दिन के लिए, अभी कॉन्सेप्ट ये है कि बंद करने से हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, तो इसलिए बंद करने की ज़रूरत नहीं, आप करने दीजिए. तो बीटा ब्लॉकर पे पेशेंट है, कई बार उसका हार्ट रेट अचीव नहीं होता है, लेकिन अगर उसके मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स जो फार्मूला होता है कि उसने इतना एक्टिविटी कर लिया है,
तो एंड उसका हार्ट रेट भले ही नहीं बढ़ रहा है बट ही इज़ कंफर्टेबल, देन वी अज्यूम दैट ही इज़ नॉर्मल। सो अगेन अगर कोई एथलीट है और वो 5-6 किलोमीटर चल रहा है रोज़, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, तो फिर देन द ओनली वे टू फाइंड आउट इज़ टू डू अ ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें हम ECG मॉनिटर कर लें या स्ट्रेस टेस्ट कर लें, डोबिटामिन स्ट्रेस एको, जिसमें एको में RWM में देखें। ऐसे लोगों को TMT की जरूरत है। प्रिसाइजली सर, अगर वो चलते हैं और कोई सिम्टम नहीं हो रहा है तो अगर कोई पेशेंट आके कहता है कि मैं रोज़ 6 किलोमीटर चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ, तेज़ी से चलता हूँ, तो मैं कह देता हूँ ट्रेडमिल करके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, देयर इज़ नो पॉइंट। तो आजकल जो यंग जनरेशन में जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू लाइफस्टाइल। इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। मतलब नहीं, जिमिंग अगर एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं तभी होगा, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर गाइडेंस तो नहीं होगा। एंड फास्ट फूड एंड हैबिट्स, स्लीप, रात को सोते नहीं हैं, 2 बजे तक जगे हुए हैं, सुबह 6 बजे 8 या 10 बजे 12 बजे तक सो रहे हैं, या तो फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है मैम। ओके, पहला केस है, एक 46 ईयर ओल्ड मेल है जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, पहले से ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, 1 साल पहले उसको MI हुआ है और वो आके कहता है मुझे लगता है मुझे फिर से हार्ट अटैक हो रहा है। तो पहला इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे? ECG आंसर है इसका। नेक्स्ट पेशेंट है एक 30 ईयर ओल्ड मेल, उसका अभी एंकल फ्रैक्चर हुआ था और उसकी सर्जरी हुई है और सडन ऑनसेट चेस्ट पेन है। डायग्नोसिस? नेक्स्ट पेशेंट है एक यंग मेल है जिसको सडन चेस्ट पेन विच इज़ रेडिएटिंग टू द बैक एंड फोटो में ही इसका वो है, इसको एक मस्कुलोस्केलेटल अबनॉर्मैलिटी है जिसको थंब साइन और रिस्ट साइन कहते हैं और यंग मेल है, इसको चेस्ट पेन हो रहा है। लाइकली डायग्नोसिस? ये मार्फन सिंड्रोम के फेवर में जाता है अगर इस तरह का फोटो है तो मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो यस सर। डॉक्टर सरेंद्र नेक्स्ट है एक अल्कोहलिक मेल है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, सडन ऑनसेट चेस्ट पेन हुआ वॉमिटिंग या हीमेटेमेसिस के बाद। लाइकली डायग्नोसिस क्या है? हीमेटेमेसिस फॉलोड बाय चेस्ट पेन। सर इसोफेजियल वायरसेस भी हो सकता है बट ये मैलोरी सर गिरिराज शरण सर ने बोला मैलोरी वेस्ट सिंड्रोम, मैलोरी वेस्ट टेयर है एक्चुअली, ये टिपिकल है। 2-4 बार वॉमिटिंग किया उसने, एक हीमेटेमेसिस होगा क्योंकि लोअर इसोफेजियल पे इसोफेगस पे रप्चर हो गया और फिर उसको चेस्ट पेन होगा जो बहुत सीवियर होगा। लास्ट young healthy male was lifting weights when he had sudden onset sharp chest pain and breathlessness. On examination, he has tachycardia, tachypnea and hypoxia. He has decreased breath sounds on the left. Likely diagnosis is pneumothorax. Lung involvement, pneumothorax है उसका।